Hello, good evening, everyone. Hello, good evening, everyone. Welcome back to Vision Wednesday. It's been almost I think 2 weeks that I've spoken to you. So आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशन से मोटिवेट होके I have put this topic which I want to share with you. एक Hi, good evening, Ajay. How are you? Nitin, thank you for joining. आज का जो मैं जो टॉपिक है ये एक एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन से निकला है और इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए और बिकॉज जो मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई है एक किसी इंसान से ये वहाँ से निकल के आया है एंड आई फेल्ट दैट समटाइम्स हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और वी कैन मिस आउट ऑन वेरी बिग लाइफ लेसन्स which can really change the way we look at it. So we'll wait for a minute before I have gotten message that somebody else is also joining. So I'm just waiting for the other person to join. All right, so let me start. So, it so happened that यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज थी और मेरा ड्राइवर जो है गाड़ी का वो नहीं आया उस दिन. So मैंने उसको बोला कि क्या कारण है, तो उसने बताया कि उसके घर के आसपास पानी भरा हुआ है और उसके घर में भी पानी आ गया है तो he needs a break. So in this condition I thought कि I will not drive myself, so let me ask a cab. So मैंने कैब बुक करा, कैब में बैठे एंड आई गॉट टॉकिंग टू दैट मैन एंड रास्ते में मुझे कुछ सामान कहीं किसी के घर पे दे के आना था और वो सामान देने के बाद जब मैं उनके घर में लिफ्ट या एलिवेटर नहीं था, इट वाज ऑन द 3rd फ्लोर. सो मैं 3rd फ्लोर तक गया, 3rd फ्लोर पे उनका सामान दिया और दे के वापस आया, आके गाड़ी में बैठा तो वो हंसने लग गया ड्राइवर. सो मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला सर आपको सांस चढ़ गई है. मैंने कहा यार 3 मंजिल ऊपर गया हूँ, 3 मंजिल नीचे आया हूँ और सांस तो चढ़ेगी. बोला बट सर मैं 10 मंजिल तक बिना सांस चढ़े मैं चल जाता हूँ. आई लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड वेरी फिट दो स्लाइटली ऑन दी हाई साइड एंड बट आई सेड कि यार 10 मंजिल तक लगातार. तो मैंने कहा कैसे? बोला सर जो आप मेरे को देख रहे हो आप बताओ मेरा वेट कितना होगा पहले. मैंने कहा यार अभी कितना है? तो he must be around 76 kgs or maybe 80 kgs at best. So and he was fit, not fat. So मैंने कहा होगा यार 80 किलो के आसपास. तो he said कि सर आप बताइए मेरा आज से 3 साल पहले वेट कितना रहा होगा. मैंने कहा यार 90 किलो होगा. Then he showed me a picture. उसने अपने मोबाइल निकाला और मोबाइल में से मेरे को एक पिक्चर निकाल के दी. सर अब बोला ये देखिए. He was a man of about 125 kgs. I couldn't recognize. I was surprised कि ये आदमी वही है. And then he said कि सर अभी तो क्योंकि मैं कैब चला रहा हूँ तो मेरा पिछले 8 महीने में थोड़ा वेट बढ़ गया है. अदरवाइज आप मेरी 6 महीने पहले की ये आप 6-8 महीने पहले की ये पिक्चर देखिए. And he showed me that picture. That guy was about 62-63 kgs.
एंड आई वाज सरप्राइज्ड. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? तो बोला सर पहले एक छोटा सा बिजनेस था और वो बिजनेस में बैठा रहता था, खाना पीना, खूब मस्ती करना, दोस्तों के साथ इधर उधर जाना, और नो एक्सरसाइजिंग, नो फिजिकल वर्क बेसिकली, एंड नो कंट्रोल ओवर द फूड हैबिट्स. सो ही सेड कि जैसे मैं 26-27 साल का हुआ तो मैं 120-125 किलो का हो गया. एंड दिस मैन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ही इज अबाउट 30 years old, मे बी 30 years old. सो अगले 3-4 साल वो उसी 120-25 किलो में रहा. एंड इन द बार्गेन, बिकॉज ही कुड नॉट कीप अप with his profession, he lost on lot of money अपने बिजनेस में, and he lost a lot of money. and thereafter इसकी कंडीशन वो हो गई कि उसको एक कुरियर कंपनी में काम करना पड़ा. उसने अपनी दुकान बंद करी, अपना एक कुरियर कंपनी में उसने नौकरी ढूंढी. अब कुरियर कंपनी में उसको सुबह 9 बजे पहुंचे, आपको 25-30 जो भी आपको कुरियर्स मिले हैं वो आपने जाके हर जगह दे के आने. एंड द रूल इज दैट द पर्सन डिलीवरिंग द कुरियर्स विल गो टू द डोर स्टेप एंड वहाँ पर जाके उनको कुरियर दे के आएगा. सो ही सेज कि मैं जहाँ जहाँ जाता था, जो एरिया मेरा था, वो सारी लो राइज बिल्डिंग्स थी, से अबाउट 3 floors or 4 floors, and they did not have lifts. So in the bargain he had to walk up and come back. He said about a month जब वो वापस आता था उसके पैर सूजे होते थे, उसका मुंह सूजा होता था, because with that kind of weight to be able to climb those many stairs every day and come back, and thereafter he continued with that, and he also started going to the gym. Then he controlled his diet and he also changed his lifestyle, and within about a year and a half he was down to 62 kgs. It's surprising. That's a challenge. आप बहुत लोगों को स्टोरीज सुनते हैं जो दिखाया जाता है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो people who there are the models who have, like, you must sometime I met this wonderful man called Dinesh Mohan. He is a 62 years old man with he's a model. And अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी सुनेंगे या पढ़ेंगे या आप उनसे कभी मुलाकात का मौका मिले आपको, so he's a very friendly man. You will meet him in Gurgaon. गैलेरिया एक मार्केट है यहाँ पर, उस मार्केट में वेरी रेगुलरली ही इज देयर. सो आप कभी भी घूमते फिरते उनको मिल सकते हैं वहाँ पर. एंड ही इज सो इंस्पायरिंग. ही लॉस्ट एवरीथिंग and then he regained his life, and today he's doing modeling for big shows. He is one of the most popular models in the northern part. He's an actor now. He also goes for various events he's called. So but ये जो इंसान है, he is not an influencer. He's a normal human being. That is what is so interesting and so touching. जब मैंने उसकी पूरी स्टोरी सुनी और जब समझा तो मुझे 3 चीज़ें समझ में आई. कि सबसे पहले तो आप चैलेंज को क्या समझते हैं? when I say accept the challenge, what is a challenge? Is it an internal challenge or is it an external challenge? How does it affect you? Are you comfortable with this challenge or does it make you uncomfortable? क्या आप इस चैलेंज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्या आप इस चैलेंज से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? नहीं. सो व्हाट्स अ चैलेंज? इज इट इंटरनल, एक्सटर्नल? सो 2 तरह के चैलेंजेस रहेंगे. एक आई फील वेरी स्ट्रांगली दैट एक वो चैलेंज जो कि जिंदगी आपके ऊपर थ्रो करती है. जैसे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम अमित है और ये ब्लू कैब जो एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कैब कंपनी है गुड़गांव में, आई मीन पूरे एनसीआर में चलती है, उसकी कैब चलाते हैं. आई होप ही लिसन्स टू दिस एंड आई टोल्ड हिम दैट आई विल स्पीक अबाउट हिम in a live video. So this is a challenge that the life threw at him.
But this is also a challenge which he accepted. And he accepted with grace. He accepted with an internal reason because he had to make something out of his life. एंड जैसे ही उसको रिजल्ट्स नज़र आने लगे, वो वेट लूज करने लगा, वो अपने काम को जल्दी, जो काम को वो कहता है मैं शुरू में पूरा दिन लगता था सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, when he became fit, the same thing he could finish by 3 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock in the afternoon, and thereafter he had all the free time in the world. So he says कि मेरे को बहुत सारा क्वालिटी टाइम मिलने लगा उसके बाद. See, so that challenge that the life had thrown to him, he accepted the challenge. It is an external challenge, but internally he matched it with his requirements, and he understood the value of this challenge. So एक तो ये external challenge है. दूसरे challenges जो हैं वो हैं internal challenges, which you identify as your own challenge. For example, एक बार सुधीर जो मेरे पार्टनर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे को फाउंडर हैं इस प्लेटफॉर्म के, वो बताने लगे कि उनको राइट बोलने की आदत है अपने सेशंस में, अपनी बातचीत में. तो उन्होंने उसको इंटरनली महसूस करा और उसको चेंज करने की कोशिश करी. That was an internal challenge. Sometimes we understand that there's a problem that is nagging us, and without the life asking for a change, the challenge is from inside. External challenge को आप मजबूरी में accept करते हैं, और अगर आप if you have the right kind of mindset, you will go through it and you will be able to complete that challenge. You'll accept that challenge with the right kind of spirit. Internal challenge को 99% of the times we all ignore it, and this challenge is something which is nagging you, जो कि आपके दिमाग में बार बार घड़ी की टिक टिक की तरह वो बजता रहेगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. Sometimes this is a reason for a very strong stress. For example, हमारे एक मेरी एक फ्रेंड है, वेट थोड़ा उनका ज़्यादा है, एंड वो अपने आप को उस वेट में एक्सेप्ट नहीं करती हैं. बट एट द सेम टाइम शी इज़ अ वर्किंग वूमन, बहुत ज़्यादा काम है उनके पास, सो शी डजंट हैव द टाइम एंड द एनर्जी टू डू समथिंग अबाउट इट. बट इट्स एन इंटरनल चैलेंज बिकॉज इट्स अ नीड. It's a pre-installed need to be recognized as a good person, as a smart person. उसकी नीड है, और वो नीड की वजह से ये चैलेंज जो है वो इंटरनल चैलेंज है. और वो although nobody says, I mean she looks very graceful, she looks very good, nobody says कि आप मोटे हैं या कोई, उनको everybody accepts her as it is, but she is not able to accept herself. That's an internal challenge, because her need to be to be taken as a smart person, the pre-installed need of importance is something which overrides all her emotions, and that is why this challenge is constantly nagging her. उसके दिमाग में टिक टिक, and what will happen? This challenge which you are not accepting, but this challenge remains in your mind and it is constantly nagging you, it is going to create stress. क्या आप देख पा रहे हैं मेरे को बीच में? सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ी देर के लिए वो पॉज हो गया. प्लीज शो मी योर थम्स अप सो दैट आई नो कि आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं.
All right, thank you. So, thank you so much. So, this is an internal challenge which can create a lot of stress for you. बट ये स्ट्रेस को हटाने के लिए एक तो दो चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है उसको एकदम सॉल्व कर लो, उसको फेस कर लो. नो, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ये चैलेंज इंटरनल है, जस्ट एक्सेप्टिंग द चैलेंज इज द फर्स्ट स्टेप. The same thing, it is the same thing that we teach in our in our program dream achievement process. Accepting the challenge, that this is a challenge that I have to work on. Now the problem is 90% of the time जब आपके दिमाग में चैलेंज है जो कि आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, इंटरनल चैलेंज, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. You are trying to just tell yourself, I am very busy, इट डजेंट मैटर, मैं ठीक तो हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी अभी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं. आप अपने आप को एक्सक्यूजेस बता रहे हैं, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द चैलेंज. द डे यू एक्सेप्ट द चैलेंज, यस आई हैव दिस प्रॉब्लम, एंड अगर जब तक मैं इसको ठीक नहीं करूँगा ये मेरे को स्ट्रेस बढ़ता रहेगा. जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, यू फाइंड दैट 50% ऑफ द चैलेंज इज ओवर. Your mind is at rest. I always, विजन वेंसडे में जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं आपसे हर बार एक इस तरीके का इमोशनल इशू डिस्कस करना चाहता हूँ. जैसे एक बार मैंने बात करी थी कि हम कितना अपने ऊपर ब्लेम डालना चाहिए और कितना दूसरे के ऊपर, और कितना एक्सेप्ट करना चाहिए ब्लेम और कितना नहीं. बिकॉज इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई सी अराउंड. Same way, accepting the challenge is the first step which takes away the stress of the challenge. Now, this challenge, once you've accepted, you have to please validate it. कि ये challenge हुआ क्यों है तुम्हें internally. External life का कोई challenge नहीं है. Sometimes बहुत सारे, I mean, even my wife says कि whenever I'm little stressed out, she says सब कुछ तो ठीक है. Health wise आप ठीक हो, financially you are doing well, you have so much of security, safety all around, you have a good family, you have very good friends, you have a wonderful social life, you have a wonderful creative life, you are doing what you want to do, which is right. But at the same time, why are you stressed out? So this stress is something that is nagging me. And this stress may be out of my pre-installed psychological needs. It is not an external challenge that the life is throwing, because life की तरफ से all challenges are met. There is no issue. Mercedes लेना है, चलाओ, ले लो. घूमने जाना है, घूमो. We just, I travel almost 3 to 4 months in a year to different places. So, whatever I want to do, I'm doing it. But this challenge is an internal challenge, which is a very typical problem and very specific problem that we all need to face. A challenge, accepting mentally, is the first step that will take away all your stress. Thereafter, there are various steps that you need to take. There are various things that you have to, like you have to validate your challenge. You have to see what kind of psychological need is creating this kind of challenge, and what do I need to do about it. Everything is not about your body and your physique and your appearance. Sometimes when I have not written for a very long time, and I'm stuck in that story or the novel that I'm writing, when I'm stuck in that for a very long time, it is a stress creator for me कि मैंने लिखा नहीं है. पिछले 2 हफ्ते से मैंने I haven't written my pages. That is a stress creator for me, because creativity or creating something on daily basis is something that I crave for. That's my passion. Giving out to the society, giving back to the society is part of it.
सो जो मैं अपनी क्रिएटिविटी से बनाता हूँ या जो मैं सीखता हूँ उसको मैं आगे शेयर करता हूँ. बट इफ आई डोंट क्रिएट फॉर 10 days, माई माइंड स्टार्ट्स नैगिंग कि आपने क्यों नहीं बना. What is the reason? Because there is no external reason that is stopping me, which I know, and that is why I accepted this challenge. So first you have to validate this challenge कि आपकी किस नीड की वजह से ये आपको चैलेंज नजर आ रहा है इंटरनल. Believe me, the day you validate it, you have gone to the second step and your 80% of the challenge is over. जो फिजिकल मिटिगेशन या जो आपको चैलेंज को खत्म करने वाला काम है, दैट इज ओनली द लास्ट स्टेप और बहुत ही माइनर स्टेप होता है वो. द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट प्रोसेस of accepting the challenge and completing the challenge is just mental. See, we talk about a lot of depression cases, we talk about a lot of stress cases and it happens in the mostly in the I would say middle class and maybe higher class, maybe neo-rich, rich class. But it is not very prominent in the lower class which is doing physical labor, because that part is only 1% of the overall challenge acceptance, and they are doing that 1% of the challenge acceptance of the external challenge, because earning money, not having adequate is all an external challenge that the life has thrown to you. Working physically for that is only 1% of the overall pot, and they are spending their 99% time in that 1%. That is physical work. So there is no time left for him for the stress and this challenge, the internal challenges. Internal challenges do appear there also. I won't say that it is a class related thing, but on a very broad scale I would say कि वहाँ बहुत कम है, because 99% of the time he is into that 1% of the physical part of the challenge acceptance. और हम 99% of the times we are in the first 20% of the challenge acceptance, which is all mindset and the way you accept the challenge. So accepting a challenge, accepting the internal challenge is a very, very delicate thing, and it is very personal. You 99% of the times you cannot share it with anybody. If you agree to this, please give me a thumbs up. All those who agree to this, please give me a thumbs up so that I know कि आप मेरी बात से agree कर रहे हैं. जो आपका internal challenge है, जो आपका most stressful challenge है, उसके बारे में आप बहुत ही rarely आप किसी से बात कर पाते हैं. क्या मैं correct बोल रहा हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है? All right, thank you. So what I am trying to tell you is, yes, thank you so much. So what I'm telling you is कि आपका जो इंटरनल चैलेंज है उसको वैलिडेट करना ज़रूरी है. जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं 50% वर्क इज़ डन, आप उसको वैलिडेट करते हैं कि आपकी किस साइकोलॉजिकल नीड के साथ वो अलाइंड है. आपका अनदर 30% इज़ डन, लास्ट 20% इज़ लेफ्ट, विच इज़ एक्चुअली द एक्शन प्लान कि आपको उसमें करना क्या है. And last 1% is actually the physical movement or the work that you have to do. And that is the easiest part. So please understand this. This is also connected to the Maslow's hierarchy, which talks of physiological needs, safety need, love and belonging, esteem, self-esteem, and self-actualization. And thereafter transcendence. Transcendence is जब आपके लिए दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता, आप इस मोह माया से उठ चुके हैं, उसके बाद के हालात हैं ट्रांसेंडेंस. बट दिस एक्सेप्टिंग ऑफ चैलेंज इज अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग, एंड प्लीज join us on a webinar. We are going to have
longish webinar on the same topic today. I mean, in the Vision Wednesday, we don't have so much of time to explain all the processes and how do you do it. But we are going to have a webinar, I think, next week, next Saturday. Please join us on that webinar, and we are going to talk more about it. Thank you so much. Hope you enjoyed it, and try and accept your challenges. Try to validate your challenges, and if possible, if you can find a person with whom you can share these challenges, nothing like it. You will find that half your work is taken, half your load, half your stress can be taken off by the other person. This is a very important part of our acceptance of challenge. And challenges, believe me, life will throw it, your internal soul will throw it, your mind will throw all these challenges. Without challenges, there is no life. Challenge is a permanent part of our lives. Thank you so much. Have a great week ahead, and join us again on next Vision Wednesday, next Wednesday. See you then. Shabba khair. Good night. Thank you.